Hi everyone, welcome back to this online AWS class. So today we are going to understand what is high availability and what is fault tolerant system. These are the two main things which any infrastructure is always associated with. Okay, so in very simple terms, if you want to know what is fault tolerance and high availability, let's start with the actual definition first. So if I just Google it, what is fault tolerance versus high availability? It tells like while downtime can still occur in highly available system, the aim of high availability is to limit the duration of downtime, not to completely eliminate it. Whereas fault tolerant system is one that can operate through a fault without any downtime. Fault tolerance aims to avoid downtime completely. So ये जो definition है ना, ये उनके लिए सही है जो ऑलरेडी AWS या ऑन प्रमाइज जहां पर उन्होंने हाईली अवेलेबल सिस्टम कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, जहां पर उन्होंने फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, जैसे कि आई हैव वर्कड इन काफका, आई हैव वर्कड इन AWS also. So thing is that is very much simple to me to understand, but for a layman, like how to make you understand, or let's say कि you are actually trying to uh, define it to a business guy who is not a technical guy. So how will you make them understand? So let me make you understand in a very layman term way. Okay. Highly available system. Consider कि you are driving a car, right? You are driving from point A to point D, point B. And क्या होता है कि when you are driving, let's say कि आपकी टायर का पंक्चर हो जाता है. So you have a flat tire, but you have an extra tire also in the back, right? तो आप क्या करोगे? You will get down from the car, you will take out the tools, you will change the tire, and you will fix a extra tire which you have. ठीक है? So what happened here? You have a high availability. मगर क्या हुआ? There was a downtime. मतलब आपने कार रोकी, right? You had to stop the car, you have to park it in a safe place, then you have to change the tire, and there was a downtime. ठीक है? That downtime का मतलब यहाँ इन्होंने बोला है ड्यूरेशन ऑफ डाउन टाइम, लिमिट टू द ड्यूरेशन ऑफ डाउन टाइम. सो as I have experienced in many banks, I have worked in many banks, multinational banks. So highly available systems का एक डाउन टाइम रहता है कि देखो भाई अगर डाउन हुआ तो इतना ही मिनट हो सकता है, या इतना ही सेकंड्स हो सकता है, या इतने से इतने के बीच ही हो सकता है. दैट इज आवर रिस्क एपेटाइट. ठीक है. सो दैट इज हाईली अवेलेबल सिस्टम. अब लेट्स टॉक अबाउट फॉल्ट टॉलरेंस. फॉल्ट टॉलरेंस यहां क्या बोल रहा है देखिए, इट अवॉइड्स डाउन टाइम कंप्लीटली. ठीक है. वेयर एज हाईली अवेलेबल सिस्टम क्या बोल रहा है कि देयर इज अ डाउन टाइम, जैसे कि वी सॉ इन द एग्जांपल ऑफ द कार टायर पंक्चर, राइट? वी हैड टू स्टॉप द कार, मींस देयर वाज अ डाउन टाइम. ठीक है. सिमिलरली कि एक सिस्टम में अगर हाईली अवेलेबल कॉन्फ़िगर्ड है तो उसमें एक डाउन टाइम हो सकता है कि दूसरा सिस्टम को अप करने में जो टाइम लगे, लेट्स से 2 मिनट 5 मिनट, वो उनका डाउन टाइम है. ठीक है. ऑटोमेटिकली सर्विस राउट हो जाएगी दूसरे सिस्टम में, मगर ये 2 से 5 मिनट का जो डाउन टाइम है वो हाईली अवेलेबल सिस्टम में रहता है. ठीक है. सो कोर्स डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम, जो कि वेरी हाईली रेजिलियंट सिस्टम होते हैं, उनके सेकंड्स में होते हैं, किसी का मिली सेकंड्स में होता है, किसी का मिनट्स में होता है. सो डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉल्ट टॉलरेंट इन अ वेरी लेमन टर्म्स. फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ एयरप्लेन. ठीक है. एयरप्लेन में ट्विन इंजन होते हैं, 4 इंजन होते हैं, 2 इंजन होते हैं, ट्विन इंजन होते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ट्विन इंजन. तो लेट्स से वी आर ट्रैवलिंग एंड एक इंजन फेलियर होता है उसमें. सो
क्या होगा फिर? एक इंजन फेलियर होगा तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला जो इंजन है इट टेक्स ओवर एंड इट सेफली लैंड्स इन द एयरपोर्ट। ठीक है, मतलब डाउन टाइम नहीं है यहाँ पर। डाउन टाइम मतलब जैसे एचए में हम लोगों ने देखा डाउन टाइम है, फॉल्ट टॉलरेंट में डाउन टाइम नहीं है, मगर कैपेसिटी कम हो सकती है, मगर डाउन टाइम नहीं है। राइट, अल्टीमेटली कि वर्क हो रहा है, दैट इज योर फॉल्ट टॉलरेंस। राइट, so when we study more on AWS and other things like services, अगर हम जब पढ़ेंगे, राइट, लेट्स से S3 स्टोरेज जिसका अप टाइम 99.99 से है, 99.119 से है, अभी तो मतलब पहले से और भी ज्यादा स्टडी हो रहा है, तो दिस इज वेयर विल स्टडी मोर हैंड्स ऑन, विल सी S3 स्टोरेज के बारे में, हाईली अवेलेबल सिस्टम्स के बारे में, फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम के बारे में। So, you guys, thanks and have a great day ahead.